Assalamu alaikum and welcome to lecture number 21 for the course Corporate Social Responsibility MGT610. Today we're going to end our chapter number 5, which is a very important chapter, and it is about creating a corporate social responsibility framework. The learning objectives for the chapter, which we have discussed earlier as well, are that we need to understand the importance of historical evidence in exploring the concepts of CSR, examine the processes of integrating CSR into the strategic framework of organizations, provide simple suggestions on implementation processes of CSR for organization to understand that CSR perception and delivery have to take into account both global and local practices. So these are the learning objectives for this particular chapter. In this lecture, when we are ending our chapter number 5, what we're going to do is we're going to connect the entire chapter together, and we'll see as to how different things are interconnected with each other. You need to realize that you might feel this particular book made the number of chapters are very few. Very true. We just have to do 9 chapters in this book, but all those chapters contain a lot of information, and sometimes, especially for those who have not done this particular course or not have studied this particular subject in detail in their bachelor's, उनके लिए फिर बहुत सारी information हो जाती है. So keeping that thing in mind and keeping the importance of this chapter in mind as well, what I've done is we're going to dedicate this entire lecture to summarizing and interconnecting all that has been said in chapter number 5. Now, we've understood the fact that whenever we are talking about corporate social responsibility, it requires a deep understanding of history and cultures. Because again, question ही आता history और culture का corporate social responsibility से क्या ताल्लुक? Your history of a particular country and culture of a particular country basically impacts the behavior of individuals. Now, once the history and the culture is going to have an impact on the behavior, it is the behavior of individuals which is going to impact corporate social responsibility, meaning that organization का खुद अपना कोई behavior नहीं होता. It is just a combination of all the behaviors of all the people who are working in the organization, and all of this makes up the organizational behavior, right? So जब आपका culture और history जो है वो आपके individual behavior को affect करेगा, तो automatically यही individual जो है ये organization में जाकर work करेगा या job करेगा या उस organization को operate करेगा, as a result of which the individual behavior is going to be reflected in the behavior of the organization. So whenever you're understanding as to why organizations behave in a particular way, and whenever you're understanding the concept of corporate social responsibility and understanding as to how you can implement it in organizations, you need to understand, or you need to study the history and the cultures of the particular country in which the business is being operated. Now, what it needed is that आपको committed integration into the strategy of an organization. What is needed is that you need to commit corporate social responsibility. You need to integrate corporate social responsibility within the strategy of an organization. We've talked about this before as well, because अगर आप strategy में अब CSR को integrate नहीं करते हैं and you keep CSR as a voluntary activity, what will happen is, first, ऐसा कोई situation create होती है whereby the organization is not performing well, maybe the revenues are going down, maybe the economic situation is not that good, maybe there's recession in the country or globally, then what will happen is that the very first thing which will be axed are going to be your social responsibility initiatives. On the other hand, when you are integrating your CSR with your strategy and you weave it into the fabric of your organization, then what happens is that no matter how good or bad your company is performing, no matter if you're profitable or not very profitable, no matter what state the economy is in, your company is going to continue with corporate social responsibility. Now, whenever you are weaving CSR or integrating CSR with strategy, you need to look at certain things, you need to look at certain concepts, and you need to look at certain views. What are those? Those are risk analysis, building trust, subliminal impact of history, corporate ideology and history, appreciating culture, governance and culture, apprehensions of the societies, and true nationalism. So all these factors that I've just
read out from the slide, they're all important and they play a very, very important role whenever we are talking about integrating corporate social responsibility into a strategy, because all of them would automatically impact the strategy as well. So इनका impact is also going to affect कि जी आप CSR को strategy के साथ कैसे interlink करते हैं और कैसे wind करते हैं. The next thing that this chapter talks about is creating a framework for CSR. कि whenever you're creating a framework for CSR, what are the various things that a company should look at? Now, before that discussion takes place and before we start talking about CSR frameworks, what we need to talk about is कि उस फ्रेमवर्क डेवलप करने से पहले, CSR का फ्रेमवर्क डेवलप करने से पहले, it is extremely important that we understand the corporate culture and the invented traditions of the organization. Now, what is the corporate culture? It is the institutional environment which consists of beliefs, values and norms of the members of the organization. और जो beliefs, values and norms members के होते हैं, employees के होते हैं, they all sort of come together, they all combine with each other and they make the corporate culture of the organization. So अगर मैं कहूँ कि in company का या organization का corporate culture क्या है, it is basically the corporate culture of the company reflects the beliefs, norms and values of the individual members of the institution. And similarly, आपका corporate culture जो होता है, company से corporate culture होते हैं, they all come together and they make the industry's culture as well. So अगर हम सिर्फ industry culture की ही सिर्फ बात कर लें, industry culture is also dependent on the values, norms and beliefs of the individual members of one particular organization, because industry culture जो है वो corporate culture पर depend होता है और corporate culture जो है वो automatically आपके individual institutional members की values, beliefs and norms पर dependent होता है. Now, while implementing corporate social responsibility, one also has to keep in mind the concept of traditions, invented traditions. Now, there are a set of practices governed by overtly or tacitly accepted rules. These rules have symbolic nature and inculcate certain values and norms of repeated behavior which implies continuity with the past. So invented tradition का और corporate culture का बहुत close सा link होता है, because आपकी जो traditions होती हैं वो eventually आपका culture बन जाती हैं. So whenever we are talking about creating CSR or whenever we are talking about implementing CSR, you need to realize or you need to keep in mind that it is extremely important and imperative that we first study the corporate culture and the invented traditions of the organization, and then we think about or then we make a strategy for implementing corporate social responsibility. अगर आप कंपनी के कल्चर को और कंपनी के ट्रेडिशंस को जहन में रखकर implementation strategy नहीं बनाएंगे, then your CSR implementation strategy will never be able to work. For example, अगर कंपनी का corporate culture ये है कि जी it's a टीम मैनेजमेंट स्टाइल में काम होता है, पीपल आर आस्क्ड अबाउट देयर ओपिनियन, आप उन पर डिसीजन इम्पोज नहीं करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या क्यों करना चाहिए. इस किस्म के कल्चर में इफ़ यू कम इन एंड यू स्टार्ट इम्पोजिंग योर डिसीजंस दैट दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी डन एंड यू डोंट टेक फीडबैक एंड यू डोंट इन्वॉल्व पीपल, डू यू थिंक द डिसीजंस विल वर्क? No, they will never work. Why? Because your actions, your behaviors are basically going against the basic corporate culture or the tradition of that organization. So same rule is going to apply whenever you are implementing corporate social responsibility as well. While implementation of CSR, you need to keep in mind the tradition and the invented traditions and the corporate culture of the organization. In addition to this, before even implementing corporate social responsibility, everybody has to make it very clear that it is no longer a voluntary activity. या उसको हम voluntary activity के तौर पर take up नहीं करेंगे. It has to be woven into the fabric of the organization. It has to be integrated with the strategy of the organization, because if you don't do that, then as I said earlier as well, the first problem that your organization will face और जो पहला आपको मसला पड़ेगा कि आपकी sales revenues में असर होगा, the very first thing that you will stop doing is your social responsibility initiative. So इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन problems को से अपने आप को safeguard करने के लिए, it is better कि आप जो आपका corporate culture है उसको आप अपना उसको आप don't take it as a voluntary activity, but
take it as something which has to be integrated within the systems, processes and operations of the organization, so that it is woven into the fabric of the organization and can continue for a very long time. Having said that, you also need to realize कि हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि आप कभी भी corporate social responsibility initiatives को short term में नहीं लेंगे. You need to think of these initiatives in the long run. आप कोई भी अगर social responsibility initiative start करते हैं, it's not going to be for the next 6 months only. It's going to be there forever and it's going to continue. Now continuity के लिए भी आपको इसको strategy से integrate करना बहुत ज़रूरी है. Continuity के लिए भी it is extremely important कि आप इसको अपनी organizational fabric के साथ इसको weave कर दें. Now whenever you are creating a framework for corporate social responsibility, there are 3 levels of implementation framework. Yeah, corporate social responsibility can be implemented at 3 different levels. Now, what are those and what is the implementation? And when I say the implementation has to be integrated through 3 stages, what are those 3 stages? It's the inner corporate level or the corporate ideology, the intermediate national level or the national level ideology, or the outer universal level or the global ideology. And this is what I'm talking about. The corporate ideology, that's your innermost level, your intermediate ideology, which is your national level ideology, which comes in the middle or the intermediate level, and then you have your global ideology or the outermost level, जिसके और आप इन तीनों stages में, इन 3 levels पर अपनी implementation policy को देखते हैं कि आपने इन तीनों levels पे corporate social responsibility को कैसे implement करना है. And वही कंपनीज सक्सेसफुल होती हैं, वही कंपनीज ग्रो करती हैं, वही कंपनीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाती हैं व्हेन दे आर इम्प्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन दीज 3 different levels. Now what we're going to do is we're going to study each one of them in greater detail. The very first level is the inner corporate ideology level, right? And it's the basics, it's right there in the center of everything. It consists of core value foundation based on integrity, accountability and transparency needed to be built. So whenever we are talking the value foundation or the core values on which the organization has been formed, on which serve as the foundation for the organization, it is extremely important that our core values में integrity, honesty, transparency or even corporate social responsibility, rather importantly corporate social responsibility को integrate करें. So आप इन 4-5 concepts को अपनी value systems के साथ integrate कर देंगे, then automatically just the way that the blood flows inside our body through and through, आपकी जो organization का blood होगा उसमें ये सारे integrity, honesty, responsibility, accountability, transparency, social responsibility के concepts जो हैं वो automatically flow होंगे, just because क्योंकि आपका value system is based on this concept, so that क्योंकि आपका जो value foundation है that is based on these concepts. Now these core values are basically generally utilized or used to give directions to decision makers whenever they're choosing between 2 rights and 1 right and 1 wrong alternative. So decision making में आपके values जो हैं they play a very very important role. Now decisions that the managers take can be of 2 types. One is choosing between 1 right and 1 wrong. Now in this particular situation the choice is very clear, क्योंकि आपने गलत काम नहीं करना इसलिए आपने सही चीज़ choose करनी है, so you're going to choose the right alternative and you're going to not choose the wrong alternative. But what happens when you are faced with a situation whereby you have to choose between 2 right alternatives? एक option भी सही है, दूसरा option भी सही है, उस case में आप क्या करते हैं? And it is cases like these whereby you have to choose between 2 right alternatives that your core values or your value foundation play an extremely important role. और depend करता है कि आपकी value foundation में social responsibility, transparency, accountability, integrity, honesty कितनी ज़्यादा है, आपके decision गलत या सही हो सकता है. So you really need to see, और जब आप अपने core values को जो कि based on good integrity, honesty, transparency और accountability के concept पर आपकी core values based हैं और
तब आप डिसीजन लेते हैं, then automatically you're going to see कि अगर 2 राइट्स हैं तो उसमें से प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन सा डिसीजन है, इन टर्म्स ऑफ के टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, किस चीज़ की इस वक्त ज़्यादा अहमियत है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू देन चूज द राइट अल्टरनेटिव अमंग द अदर चॉइसेस दैट यू हैव. सो दैट इज़ हाउ आपका जो वैल्यू सिस्टम है और दैट इज़ हाउ आपका जो foundation है, value foundation है, it helps managers and entrepreneurs in making or taking right decisions, especially when they are faced with choices which are all of them are right, and then the manager has to see कि उसको अपनी choices को prioritize करना होता है और according to the time and the location choose या choice करनी होती है. Now, a practical approach to judging value-based management would be to understand. So, जब हम कहते हैं कि जी corporate values को discuss करना है, तो फिर हमको ये भी judge करना है कि जी value-based management क्या होगी. Value-based management basically होगी कि आप throughout your organization values को disperse करें और पूरी organization में values को promote करें. Now, how do you do that? You do it at the micro level, you do it at the macro level, and then you are doing it at the operations and the processes level as well. Now, when we are talking micro level integration by the firm, what are we talking about? It relates to individual activities that the firm undertakes both as suppliers and consumers of labor and capital. So, micro level integration basically होगी कि जी वो सारी एक्टिविटीज़ में आपको वैल्यू क्रिएट करनी है या वैल्यूज़, अपनी कोर वैल्यूज़ को यूज़ करना है जहाँ पर आपकी कंपनी एज अ सप्लायर एक्ट कर रही है या एज अ कंज्यूमर एक्ट कर रही है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हेल्प्स द फर्म एग्जामिन हाउ वैल्यूज़ कैन बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट दे अंडरटेक टू एलोकेट रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी टू अर्न प्रॉफिट्स. सो बेसिकली एज आई सेड, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू इनकॉर्पोरेट your values into all the activities that the company is doing to acquire resources and to make a profit. Now, what are all those activities in which you have to integrate your value system or use your value foundation? The activities are position in the stock market, how you are positioned in the stock market, portfolio management, choices between the strategic options, assessment of impact on business plan, target setting and benchmarking, analyzing क्या आपकी resource sourcing, prioritizing and allocation of resources जो है वो सही है या नहीं है. Appraisal of performance and organizational image, focus on business and operational strategies that maximize value, break down plans into objectives so that it is ensured that there is value throughout the organization, provide undiluted support for difficult but essentially long-term initiatives, investment in research and development, and be transparent about risks and benefits of technology and be open to disruptive innovations. So, जब आप micro level इंटीग्रेशन की बात करेंगी फॉर दी कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी के रेफरेंस है कि जी आपने इनर सर्कल में या इनर कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी में आपने अपनी CSR को कैसे इम्प्लीमेंट करना है. CSR की इम्प्लीमेंटेशन आपके इनर सर्कल में करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन सारी एक्टिविटीज़ में जो कि अभी हमने लिस्ट डाउन की, आप इन सारी एक्टिविटीज़ में अपने वैल्यूज़ को इन्वॉल्व करें, अपनी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करें. ये सारी एक्टिविटीज़ करते वक्त सोचें कि इज़ इट इन अकॉर्डेंस विद आवर वैल्यू. इफ़ इट इज़, देन यू कैन गो अहेड with your activity. However, if your action is not in accordance with your values, and automatically that sends a signal to you कि जी आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए. Macro level integration by the government refers to national and international level policies that impact businesses. When policy makers become accountable and show responsible behavior while formulating economic policies, and CSR becomes easy. This is very easy to understand. Again, आपका जो macro level integration है, that's about your national policies and your international policies which can impact a business. और जब आप policies की बात करेंगे, they're just not made up by themselves. It is the policy makers and the legislators जो कि आपकी policy rules and regulations बनाते हैं. So जब आप macro level integration की बात करेंगे, you need to understand and you need to see कि जो आपके policy makers इतने accountable और responsible हैं that they make legislations which is going to work for the welfare of the society. They make legislation which is going to work for the betterment of the society. And they make and when they're making such regulations, automatically
automatically implementation of corporate social responsibility becomes very very easy at your corporate ideology level. So जब हमने बात की कि जी यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने they passed a legislation and a law whereby they made it compulsory कि अब आप CSR को कंपनी के operations के या strategy के बीच में डालेंगे. That is exactly what this is, whereby when they've done this, automatically by law CSR has now integrated itself with the strategy of the company, as a result of which अब companies की choice नहीं है कि वो उसको रखें या ना रखें, company की choice नहीं है कि उसको accept करें या ना करें. It is now the law and the companies have to do it. The immediate areas of implementation are basically draw long-term unambiguous policy framework of targets and regulations, establish mandatory minimum standards for public participation supported by improved incentives and performance appraisal, incorporate public welfare in decision making at each stage of policy cycle, improve transparency of governance and operations, expand and protect political space for democratic decision making at the national level, and find new and attractive ways to finance social initiatives related to sustainable growth. So आप macro level integration की बात करेंगे और हम चाहेंगे कि जी हम फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या क्या काम करें कि हम कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी लेवल पर या इनर लेवल पर हम CSR को इम्प्लीमेंट कर सकें. इट इज़ ऑल दिस दैट द कंपनी शुड डू at the micro level, and when the company and when the governments and the policy makers and the legislators will be able to do all this automatically through macro level integration, आपकी CSR जो है वो आपकी corporate part of corporate ideology जो है वो बन जाएगी. Next is integration of corporate social responsibility at the operations and the process level. Now at this level you need to see कि जी आपके operations किस तरीके से work करते हैं और आपके processes जो हैं वो किस तरीके से work करते हैं. Now if I have a company and you come and ask me कि जी how does your processes or how do you operate, and I start by telling you कि जी हम पहले ये करते हैं, फिर ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर ये होता है और end result ये हो जाता है. The chances are that by the time you will be leaving the door, you would have forgotten कि मैंने क्या बोला. As a result of which आप मेरे operations को सही तरीके से analyze नहीं कर सकेंगे. दूसरा ऑप्शन ऑपरेशंस को देखने का ये है कि आप फैक्ट्री में जाकर चक्कर लगाएं, घूमे फिरे, देखेंगे स्टेप 1 क्या, स्टेप 2 क्या, स्टेप 3 क्या, स्टेप 4 क्या है, एंड देन यू सी के जी किस तरीके से काम हो रहा है. उस केस में भी आपके पास आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसको आप सब एब्जॉर्ब नहीं कर सकोगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका एनालिसिस जो है वो सफ़र कर सकता है. However, the third solution that you can do, which is the ideal solution, is have flowcharts for your operations and for your processes, or you have an operations flowchart, or you have a process flowchart. And when you have these flowcharts, what these flowcharts are going to tell you is that they will tell you how things or activities are interconnected with one another. Step 1 activity 1 के बाद activity 2 की input activity 3 में जाती है, उसकी output activity 4 में जाती है, और किस तरीके से आप step 1 से लेकर step 10 तक करके अपनी inputs को outputs में convert करते हैं by using various different processes. And then again इस पूरे flow chart में फिर आपको exactly पता चल जाता है कि जी कहाँ unethical activities हो रही हैं और कहाँ unethical activities हो सकती हैं. और जब आपको ये पता चल जाता है तो automatically you are going to do something about ensuring unethical activities जो हैं वो आपकी organization में नहीं हो. Now the strategy to do this is to ensure that why are you seeing this? So that poor substitute of collective bargaining are not made. Remove dangers of stakeholders becoming docile and flexible at the cost of profit mongering. Long-term viability would be addressed because at every stage quality would be scrutinized. Because आपको एक particular activity की input दूसरी activity की एक particular output activity की दूसरी activity की input बनती है और आपको exactly पता चल जाएगा कौन सी activity कितनी quality produce कर रही है, कौन सा operation कितनी quality produce कर रहा है, कौन सा process कितनी quality produce कर रहा है. And then automatically those processes, those activities, those operations जो के
क्वालिटी जो है वो सही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आप ऑटोमेटिकली उनको अपने ओवरऑल प्रोसेस से या ओवरऑल ऑपरेशन से बाहर निकाल देंगे, विच विल अगेन अल्टीमेटली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी फॉर यू. नाउ द पोटेंशियल डेंजर ऑफ इन ऑल फ्लो चार्ट्स बनाने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपके जो सूडो NGOs होती हैं विच जस्ट एग्जिस्ट ऑन पेपर और एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज द फ्लो चार्ट इज सपोज टू एड्रेस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस. एंड अगर आपने एक जस्ट फॉर द नेम ऑफ इट NGO बनाई है जहाँ पर आप अपना पैसा डाल रहे हैं और पार्क कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी NGO की आइडेंटिफिकेशन है, सूडो NGO की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है, एंड ऑटोमेटिकली यू कैन टेक एक्शंस अगेंस्ट दोज थिंग्स. सो जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स की बात करते हैं, जब आप स्पेशली प्रोडक्शन एंड प्रोसेसेस फ्लो चार्ट्स की, वन अप दे गिव एन ओवरऑल व्यू ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. कंप्लीट जो आपकी एक्टिविटी हो रही है, इट जस्ट गिव्स यू, आप एक दफ़ा पेपर को देखेंगे, you'll have a look at it and you'll see that this is how things are going on in this business, or this is how things are managed in this business. So the very first advantage of having operations and processes flowcharts is that they give you an overview of all the activities. Next, that you can see कि क्या हर activity में corporate social responsibility built in है या नहीं है, and then if it is, then you don't have to do anything. If it is not, then you take corrective measures. Now, what are the various things about which you make a flow chart? The various activities or the various processes or operations are resources, production processes, production of goods, planning, organizing, controlling operations, and human resource. So what you're doing is you are making फ्लो चार्ट्स फॉर ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और आप इन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में फ्लो चार्ट्स बनाते हैं सो दैट यू गेट टू नो व्हाट आर ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड, एंड देन यू सी के क्या हर एक्टिविटी में CSR जो है वो इनबिल्ट है या इनबिल्ट नहीं है. सो दैट इज़ हाउ आपको जब कहते हैं ना कि आपने CSR को इम्प्लीमेंट करना है अपने इनर मोस्ट लेवल में या कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी लेवल में, तो अगर आपने CSR को अपनी कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी लेवल में इंटीग्रेट करना है या उसके साथ मिलाना है, then automatically आपको माइक्रो लेवल इंटीग्रेशन भी करनी होगी, आपको मैक्रो लेवल इंटीग्रेशन भी करनी होगी, और आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू अपने प्रोसेसेस को, अपने ऑपरेशंस को स्टडी करना पड़ेगा टू सी कि आपके प्रोसेसेस और ऑपरेशंस जो हैं वो CSR फ्रेंडली हैं या नहीं है. द नेक्स्ट लेवल इज योर इंटरमीडिएट नेशनल आइडियोलॉजी लेवल, जिसमें आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना होता है. Now CSR becomes difficult when companies maintain and build facilities in countries without the appreciation of the national cultures and histories. So हमने पहले ये बात कर ली कि किसी भी कंट्री के लिए उसका कल्चर और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इफ देयर इज अ कंट्री जो कि अपने कल्चर और हिस्ट्री को अप्रिशिएट नहीं करती, वहाँ पर CSR और इम्प्लीमेंटिंग CSR बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, almost impossible. The relation between the culture and the CSR depends upon the size of the company. जितनी बड़ी कंपनी होगी ऑटोमेटिकली से एक्सपेक्टेशंस या CSR एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा हो जाती हैं. Companies have to be actively committed to a sustainable improvement in the macro environment situation and introduce measures that go beyond statutory requirements on the countries in which they operate. So what you would want at national ideology level, especially जब आप implementation कर रहे होंगे, you would want companies to have a proactive approach towards things. You would want companies कि जी they should not wait कि जी रूल नहीं कहता इसलिए हम नहीं करते, जब रूल कहेगा तब हम करेंगे. The companies should not do that. They should have a proactive approach towards corporate social responsibility and do things, take it up initiatives, do actions because they want to be socially responsible themselves. उसमें एक आपकी statutory regulation जो है वो बहुत important होती है. जब आप statutory regulations की बात करते हैं, that's basically the rules, regulations, codes, guidelines which the government or other agencies, governmental agencies make so that the businesses remain within a particular limit or within a particular domain. Now, statutory regulations बनाना बहुत आसान है, but you need to understand that high social standards are directly related with
with so many other factors. आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, जो आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, वो बहुत डिपेंडेंट होती हैं कि आपके इर्द गिर्द के में क्या हो रहा है. सो अगर आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हाई सोशल स्टैंडर्ड्स होंगे. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस या सिचुएशन अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके लो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड्स होंगे. फॉर द सिंपल रीजन दैट व्हेन यू कैन नॉट प्रोवाइड the basics to your citizens, when you cannot provide food, shelter and clothes to your citizens, then you cannot think about corporate social responsibility. Corporate social responsibility काम ही उन nations का है जहाँ पर आपकी sustainable socio-economic conditions होती हैं, जहाँ पर आपके बहुत अच्छी socio-economic conditions होती हैं. Now the various reasons जिसकी वजह से आपकी जो हाई सोशल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होते, उसमें हम पहले भी कल भी पढ़ चुके हैं. उसमें एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन थिंग. दूसरा ये कि आपने अपने लिए कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं की होती. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका जो आप एक तो मसला ख़त्म कर लेते हो बट दैट जस्ट माइट रिजल्ट इन मोर सोशल इवल्स और क्राइम. जिस तरीके से हमने पॉवर्टी किया, चाइल्ड लेबर की बात की थी, आपने चाइल्ड लेबर तो ख़त्म कर दिया, बट इफ़ यू डू नॉट हैव स्कूल्स, इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, then चाइल्ड लेबर से जो उस बच्चे को इनकम आई थी वो भी ख़त्म हो गई. एज अ रिजल्ट ऑफ उसके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन और ख़राब हो गई. एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास है ही नहीं कि एजुकेशन गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर सके. एज अ रिजल्ट ऑफ विच दैट किड विल ऑटोमेटिकली टर्न टुवर्ड्स क्राइम एंड इन डूइंग नेगेटिव थिंग्स इन द सोसाइटी. सो दैट दोज आर अ फ्यू रीजंस वाई आप हाई सोशल स्टैंडर्ड जो हैं उन कंट्रीज़ में, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं बना सकते जहाँ पर आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है. द नेक्स्ट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द नेशनल आइडियोलॉजी लेवल इज दैट countries should be wary of stereotyping. Countries should not adopt systems countries should not adopt systems thinking that they would be successful in their country just because they were successful in another country. We've just given you an example on this आपको ग्रीस और इंडिया की लास्ट टाइम अराउंड हमने आपको एग्जांपल दी थी. कंट्रीज what they should see कि जी अगर एक सिस्टम किसी एक कंट्री में सक्सेसफुल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम आइडेंटिकल सिस्टम अगर आप अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगी तो वो सिस्टम वर्क करेगा. इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. वन ऑफ द रीजंस that can result in this is because the culture and the history is different. लेकिन मसला ये होता है कि because of stereotypical attitude आपके जो countries में आपकी government जो होते हैं they don't see, they just assume कि जी आप अगर एक चीज़ एक जगह सही है तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल चीज़ दूसरी जगह भी ठीक होगी. ग्रीस में पॉवर्टी कम करने के शायद और बहुत सारे डिफरेंट पॉवर्टी के रीजंस बहुत फ़र्क हों एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उस पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो सोल्यूशंस होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे. इंडिया में पॉवर्टी बिल्कुल किसी डिफरेंट रीज़न की वजह से होती है बट यू कैन नॉट अप्लाई द सोल्यूशंस दैट यू हैव अप्लाइड इन ग्रीस टू इंडिया बिकॉज पॉवर्टी के जो रूट कॉज है इन दोनों कंट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. सो जब भी आप नेशनल लेवल आइडियोलॉजी बनाते हैं या नेशनल लेवल पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं यू नीड टू मेक श्योर कि एक आपकी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस जो हैं वो सही हों एंड आप सही किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर दें, आपकी कंटिजेंसी प्लानिंग अच्छी हो और दूसरा आपको ये भी देखना चाहिए कि आप एक स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड के साथ चीज़ों को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट ना करें. जब आप ये दोनों चीज़ें एक स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड नहीं रखेंगे, आप अच्छी रेगुलेशंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नेशनल लेवल पर भी आपकी जो CSR की इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो सकती है. So that is what danger of stereotyping is. Next is the last level is the outer level or the outer global ideology. That is basically कि you overseeing कि जी globally क्या हो रहा है and are we as a corporation or are we as a country following the regulations जो कि which are laid down or following the standards which are laid down by United Nations or international labor organizations. Now ये जो आपका ILO है या जो आपका United Nations है they have given regulations about quite a number of things और आपके और सारी वो ऐसी चीज़ें हैं, वो ऐसे issues हैं जिनमें conflict arise हो सकता है. वो कौन से issues हैं? आपकी collective bargaining,
gender equality, human rights, environmental protection, free trade, financial transparency and corporate governance. और इन सब conflicts को resolve करने के लिए what these international organizations have done is they have sort of gone along with the concept of economic justice. Economic justice basically is that you need to, or countries or governments need to reduce the gaps between the haves and the have-nots. क्योंकि आजकल अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या हो रहा है, हो सिर्फ ये रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पाकिस्तान में नहीं लेकिन इन अ कंट्री लाइक इंडिया वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन the rich are becoming richer and the poor are becoming poorer for the very simple reason कि आपकी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ऐसे नहीं हैं which can ensure equitable distribution of wealth. और जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इसीलिए आप देखते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इसीलिए आप बेंचमार्क बनाते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड यू द गाइडलाइंस कि आप किस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस जो है अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटीज़ में और अपनी कम्युनिटीज़ में प्रिवेल कर सकें और रख सकें. Now you need to have a balance between total control and absolute laissez-faire at the macro level. So two extremes, rather extremes of any kind is never considered good. आप किसी भी अपनी ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट की एग्जांपल ले लें, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, you're a bookworm and you just don't do anything but study, that's not good. Because आप you cannot talk, you cannot converse, आपकी communication skills अच्छे नहीं होंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करें. On the other hand, आप सिर्फ अगर sports and television and Xbox and PlayStation सिर्फ खेल कूद में बिजी रहेंगे, even that is not good because पढ़ाई भी ज़रूरी है. आप अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप you cannot get a good job and so on and so forth. उसके बहुत सारे effects हो जाते हैं. So what needs to be done is that you need to have, an individual needs to have that perfect balance between studies and sports and games, ताकि studies भी हो and आपका बंदा relax भी हो through sports and through playing games or through watching television. So that is what we say here as well. Especially जब आप global ideology की बात करते हैं और international standards की बात करते हैं, you need to create a balance. You need to maintain a balance between total control and a free market concept. आपको laissez-faire की तरफ भी नहीं जाना है, आपको total control की तरफ भी नहीं जाना. इस तरफ जाएंगे तो automatically there are going to be no boundaries. Everybody and anybody can do whatever they want to do. On the other hand, अगर आप ओवर कंट्रोल की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉर्पोरेशंस को, इंडिविजुअल्स को एज वेल सफोकेट कर रहे होंगे, आप उनकी स्पेस ख़त्म कर रहे होंगे, उनकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम जो है वो अफेक्ट हो रही होगी. सो द आइडियल थिंग इज़ कि व्हेनेवर you are implementing standards on a global ideology level, आप global ideology को use करें, आप international standards को use करें, you need to have them as guidelines and then implement those things in your country while creating a balance between control and laissez-faire. International bodies have to be involved in bringing social justice and economic welfare in an accountable and transparent manner. So the need is कि आप international standards को इसलिए use करें because they bring about social justice and economic welfare in an accountable and transparent manner. ना वो ये जो international organization होते हैं वो किसी एक country की नहीं होती, किसी एक government की नहीं होती, किसी एक entity की नहीं होती. They're just for everybody. So most probably the standards that they will make will be just and equitable. So the need is कि आप उन equitable और just standards को आपकी countries और फिर आपकी companies use करें so that दो फायदे हों. एक, जब आप स्टैंडर्ड्स को यूज़ करेंगे दे विल प्रोवाइड योर कंपनी विद द गाइडलाइन कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना. एंड टू, व्हेन यू आर यूजिंग दी स्टैंडर्ड्स तो आप ये स्टैंडर्ड्स आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है. देन यू कैन कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज विद दी स्टैंडर्ड्स टू सी कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी या कितनी ख़राब थी. अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो एक आपका फ्रेमवर्क और गाइडलाइन भी नहीं बनेगी, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ्रेमवर्क और गाइडलाइन भी नहीं बनेगी, और दूसरा आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी और आपके लिए कंट्रोल जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो नाउ अगर हम इन तीनों को बात करें तो आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन तीनों लेवल्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इनर लेवल विच इज़ द कॉर्पोरेट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल विच इज़ द नेशनल लेवल एंड आउटर लेवल विच इज़ द ग्लोबल आइडियोलॉजी लेवल. और जब आप इन तीनों की बात करेंगे तो जब आपने कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी की बात करनी है, आपने कोर फाउंडेशन की बात करनी है, आपने अपनी कोर वैल्यूज़ की बात करनी है,
तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने CSR को इस लेवल पर इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप माइक्रो लेवल इंटीग्रेशन करें, आप मैक्रो लेवल इंटीग्रेशन करें और आप प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस के फ्लो चार्ट्स में CSR को इंटीग्रेट करें सो दैट यू आर अवेयर कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और हर एक्टिविटीज़ में CSR का कितना इम्पैक्ट है। सेकेंड इज़ आप नेशनल लेवल आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आप इंटरमीडिएट सर्कल्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि आप किस किस्म की रूल्स रेगुलेशंस लेजिस्लेशन पास करेंगे सो दैट इट इंश्योर्स कि चीज़ें जो हैं वो सही रास्ते पर चलें, सो दैट इट इंश्योर्स दैट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनीज आर सोशली रिस्पॉन्सिबल और लोग जो हैं वो एथिकली काम कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड इज स्टीरियोटाइपिंग। आप स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड के साथ चीज़ों को नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम कि इफ वन सिस्टम इज गुड इन वन ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी गुड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन नॉट अज्यूम कि अगर एक CSR का फ्रेमवर्क एक जगह अच्छा है, एक जगह एक स्ट्रैटेजी से CSR अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ़ यू वुड अप्लाई द सेम आइडेंटिकल फ्रेमवर्क और द सेम आइडेंटिकल स्ट्रैटेजी टू योर ऑर्गेनाइजेशन द चांसेस आर इट माइट नॉट वर्क। और अगेन इसकी रीज़न हम पहले डिस्कस कर चुके, रिमेंबर बिल्कुल फर्स्ट 2 चैप्टर्स में हमने कहा था कि जी WBCSD नहीं कि जी यू नीड टू हैव योर ओन डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नीड टू फाइंड योर ओन मैग्नेटिक नॉर्थ दैट इज़ what is related to this कि जी since companies के environment, cultures, traditions, लोग, expertise, operations, processes सब चीज़ें different होती हैं। It's not necessary कि rule of the thumb आप apply करें। अगर कोई चीज़ एक किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है या प्रॉफिटेबल है या काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी हो। सो जब भी आप नेशनल लेवल आइडियोलॉजी की बात करेंगे या आप इंटरमीडिएट लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस और स्टीरियोटाइपिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड देन यू हैव योर द आउटर लेवल और द ग्लोबल आइडियोलॉजी लेवल। वहाँ पर आप बेसिकली ये देखते हैं कि जी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेड बाय ILO एंड यूनाइटेड नेशंस क्या हैं और आप उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप फिर उनको कैसे बेंचमार्किंग कर सकते हैं सो दैट आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें इन स्टैंडर्ड्स के साथ टू सी कि आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, टू सी कि आपकी कंपनी जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सो दैट इज़ हाउ यू इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन these three different levels. Now अगर हमें ये समझ में आ गया कि जी हमने इम्प्लीमेंटेशंस किस लेवल पर करनी है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आप किस तरीके से फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे और या CSR का फ्रेमवर्क जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। द स्ट्रैटेजी नीड्स टू बिल्ड दैट CSR स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स एनालाइज रिस्क्स एंड बिल्ड्स ट्रस्ट सो दैट प्रॉफिट्स कैन बी अर्न। CSR के लिए या CSR इनिशिएटिव्स के लिए आई गेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रस्ट का है, बिकॉज CSR इज गोइंग टू इन्वॉल्व giving money or using money for social initiatives and आजकल की हमारी environment ऐसी हो गई है कि we're extremely skeptical and critical of people. Just take examples, अपने इर्द गिर्द देखिए, if you see somebody giving food to poor, then what would you say कि पता नहीं ये क्यों कर रहा है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, he's just showing off, he just wants to show people that he's very nice. You will not realize कि शायद वो इसलिए कर रहा है because he really actually wants to help people. But हमारी situation environment ऐसी बन गई है और उसने हमको ऐसा मोल्ड कर दिया कि हम हर चीज़ के बारे में critical हैं. So if let's say XYZ company says कि जी we're going to do things for improving education in कच्ची आबादीज़, then we're going to say अच्छा वो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स ए प्रमोशनल गिमिक, मार्केटिंग के लिए जी कर रहे हैं ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा हो। हम इतने स्केप्टिकल हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम हर चीज़ को, हर एक्शन को, हर एक्टिविटी को नेगेटिवली देख रहे होते हैं। सो अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसकी कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव्स जो हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हों और उनको सही लाइट में देखा जाए and they're seen in the way that they're meant to be seen, it is extremely important that organizations
build trust with their stakeholders. जैसे ही trust का concept आएगा और अगर trust levels high होंगे, then automatically the stakeholders are going to trust the organization and they will believe that whatever organization is doing is in the best interest of the stakeholders. इसका दूसरा perspective ये भी आ सकता है कि अगर trust का aspect नहीं होगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि whatever the company will be doing, whatever social initiative the company will be taking, the stakeholders are going to think or the shareholders are going to think कि भाई ये तो इसलिए हो रहा है ताकि हमारी dividends कम हो जाए, ये तो इसलिए काम हो रहा है ताकि हमारे profits कम हो जाए. And on the other hand, अगर trust का element हो जाएगा, वहाँ पर मौजूद होगा between the company and the stakeholders, then automatically the shareholders who are one of the stakeholders will think कि जी the company is doing this because it is ensuring कि हमारी company long run में profitable रहे. The company is doing this for the benefit of the company because अगर आप आज corporate social responsibility show करते हैं और आज आप social initiatives take up करते हैं, automatically it's going to affect the growth of the company. It will positively affect the profitability of the company and overall company की effectiveness जो है वो long run में बेहतर हो जाएगी. Now this can be visualized at different levels of value implementation. The inner circle is where the values are entrenched, second circle is where the application of the values occur, and the third is a layer of rules, structures, systems and processes that are put in place. So जब हम बात करते हैं कि जी आपने CSR के स्ट्रक्चर को ऐसा बिल्ड करना है जिसमें एनालिसिस ऑफ रिस्क भी हो और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो बिकॉज CSR और ट्रस्ट का डायरेक्ट लिंक होता है. नाउ इफ़ यू वांट टू हैव और इफ़ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू थ्रू आउट योर ऑर्गेनाइजेशन देन ऑटोमेटिकली आपको ये फर्स्ट लेयर, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल का कॉन्सेप्ट जहन में रखना पड़ेगा. वेयर बाय योर इनर सर्कल इज़ द वन विच इज़ बेसिकली आपकी जो वैल्यूज़ और आपकी जो फाउंडेशन है वो होती है. बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज आप अपना एक्टिविटीज़ को करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोसेसेस चलाते हैं और ऑपरेशंस करते हैं एंड ऑटोमेटिकली फिर आपके फॉर्मल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड्स, गाइडलाइंस भी होते हैं जिनके अंदर रहकर कंपनी को अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है. सो बेसिकली जो आपकी ऑपरेशंस और जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो एक साइड पर आपकी वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट होती है और दूसरी साइड पर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर डिपेंडेंट होती है. एंड थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड थ्रू वैल्यूज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि all its activities are carried out ethically and all its activities are carried out keeping in mind the concepts of corporate social responsibility. So हमने दो चीज़ों को अब तक बहुत डिटेल में पढ़ा. एक बात हमने डिस्कस की कि आपने corporate social responsibility को implement करना है within those three corporate, national and global ideology level. और meanwhile जब आप उन तीनों में जब आप implement कर रहे होंगे तो आपकी वैल्यू क्रिएशन हो रही होगी थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन. और वैल्यू क्रिएशन के लिए अगेन वही वाली बात कि आपको अपनी वैल्यूज़ को देखना है, रूल्स रेगुलेशंस को देखना. और इसको भी अगर आप देखें तो वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट दोज थ्री बेसिक लेवल्स अगेन बिकॉज ये जो है आपका बिल्कुल इनर लेवल हो जाता है विच इज़ द कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी लेवल. ये आपका ये वाला जो चीज़ है ये आपका नेशनल और आपका ग्लोबल आइडियोलॉजी लेवल हो जाता है बिकॉज रूल्स रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स जो कि आपके नेशनल लेवल पर बने या इंटरनेशनल लेवल पर बने एंड देन all of these three basically is impacting your implementation process or your activities or your operations. So that is what your levels of value implementations are. जब आप value को implement करेंगे organization में so that value is there throughout the organization, you can do it through this. Now जब आप वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे then you also need to train people so that आपकी वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से हो. Now whenever we are going to talk about training people, you will train people using three simple stages. What are those three simple stages? First up is the information sharing. Now information sharing is कि जो आपने वैल्यूज़, मिशन, विजन बना लिया है अपनी कंपनी के लिए, you need to communicate it and you need to share it with all your stakeholders because आपका विजन, आपका मिशन और आपकी वैल्यूज़ अगर सिर्फ इधर हैं तो सिर्फ आपको पता है. But then again you are not the only one who is running the company. There are hundreds of
others who are helping you do it. So it is extremely important that the vision, mission, values that you have right here, beliefs that you have right here, you share them with everybody who is working in your organization, because आपकी जो values हैं, they play a very very important role in how activities will be carried out in the organization. जब हम information sharing की बात करेंगे, उसमें हम organizational values की बात कर रहे हैं, उसमें हम vision and mission की बात कर रहे हैं, उसमें हम cultural briefing की बात कर रहे हैं, उसमें हम ये भी बता रहे हैं और employees को जी कि what is tolerant or which behavior is acceptable and which behavior is not acceptable. And then we are making ourselves extremely clear that there is going to be zero tolerance for unethical activities in the organization. So that is how, or these are the type of information that you are sharing with people in the with the people working in your organization, so that आपकी value implementation जो है वो बहुत आसानी से हो जाए. The second thing is that you need to check effectiveness. Yes, you have communicated values, beliefs, missions, visions to your employees, but then you see कि क्या उनको समझ भी आया है. आपको you need to continuously remind them of that. अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप बार बार बुलाते. A lot of time companies have these values and mission printed and pictured, और वो आपकी organization में various जगहों पर वो frame होकर लग जाते हैं. So that's a reminder that you're telling them कि this is the value, this is the vision, this is the mission that we stand by, so that लोग employees जो हैं उनको भूले नहीं. Then you need to talk about और see कि जी जो आपने problems face की थी और जो solve कर ली उनकी effectiveness कैसी थी, सही से solve हुई, सही से solve नहीं हुई, दोबारा आकर तो नहीं हुई. You need to see that. Critical decisions should be supported by values. Again हमने पहले भी बात की, your critical decisions have to be supported by values. You know it or you don't know it. Every decision that you take is supported by your values, and the same thing happens in the organization as well. So automatically अगर values सही होंगी तभी आपके decisions जो हैं वो भी सही होंगे. Then you have to train them in ethics, and then they have to learn to assimilate ethics at workplace. So आपको workplace ethics और training in ethics भी अपने employees को और organizational इन जो काम करते हैं लोग उनको देनी पड़ेगी. Finally, you have the integration approach, which is formation of an assessment center, real on-the-job experience, analysis of responses, developing sensitivity, and appreciating differences. So this is a third stage of training which can be used for value implementation, जहाँ पर आप on-the-job experience की बात करते हैं, आप developing of sensitivities की बात करते हैं कि भाई sensitivity क्या चीज़ होती है कि भाई अगर मैंने आपको बताकर ही काम करवाना है तो उस काम का क्या फ़ायदा. The point is कि आपके सामने environment है, आपके सामने situation है. You yourself should look at the situation. You yourself should analyze the situation and then see कि चीज़ सही है या सही नहीं है. So that is what we call as an integrated approach. और जब भी आप value implementation की बात करेंगे, whereby you want to have value throughout the organization, you will have to take into account these three different circles. And in 3 different circles में अगर आपने value implementation करनी है तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और वो जो ट्रेनिंग जो है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में होगी. सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, फिर आप इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे, एंड फाइनली आप इंटीग्रेशन की अप्रोच को रखेंगे और उसको यूज़ करेंगे. Now, the usual method of taking corporate social responsibility decisions are result-oriented, duties-oriented, and moral obligation-oriented. Every decision that these companies take with respect to corporate social responsibility is either result driven. हम ऐसा कर लेंगे तो हमको ये फ़ायदा हो जाएगा. It is, in other words, duties related, because rules ये कह रहे हैं, regulations ये कह रही हैं, obligations ये कह रही हैं, इसलिए हमको ये करना है. And finally, you have your moral obligations as well, whereby you think that you should do it because it is the right thing to do, it is the ethical thing to do. आपके moral standards अच्छे हैं तो इसलिए आप ये कर रहे हैं. So generally, आपकी general जो approaches होती हैं corporate social responsibility के, बल्कि आपने ये तीनों approaches अपने bachelors में पढ़ी होंगी, because जब आप management में corporate social responsibility के टॉपिक्स को पढ़ते हैं उसमें यही 3 अप्रोचेस होती हैं कि आपका जो लेवल ऑफ प्रोएक्टिवनेस है वो कितना है. अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो आप सिर्फ वो काम करेंगे बिकॉज आप यू जस्ट डूइंग थिंग्स बिकॉज उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी या मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है. दूसरा जो लेवल होता है वहाँ पर आप इसलिए काम करते हैं बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू डू दैट बाय द लॉ. आपको
सिंस लॉ सेज इट, रूल बना हुआ है, रेगुलेशन बनी हुई है, गवर्नमेंट ने आप चेक और मॉनिटर आपको करे, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट. एंड फाइनली आपकी मॉरल, कुछ ऐसे भी कंपनीज होती हैं जो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजंस इसलिए लेती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि जी इट्स आवर मॉरल ड्यूटी, हमको काम एथिकली करना चाहिए, काम सही करना चाहिए, वी शुड नॉट डंप वेस्ट इन वाटर बिकॉज इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट एथिकल, दैट्स व्हाई दे डोंट डंप इट. हाउएवर ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपको CSR के डिसीजंस, रिजल्ट या ड्यूटीज़ या मॉरल ऑब्लिगेशन डिपेंडेंट होना चाहिए, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट गलत है. व्हाट कंपनीज शुड सी इज दैट द कंपनीज शुड डू एन ऑर्गेनाइजेशनल डेट एनालिसिस. डेट क्या होती है? डेट इज अ लायबिलिटी. डेट इज समथिंग दैट यू ओwe टू अनदर पीपल. डेट इज समथिंग दैट यू ओwe टू समबडी एल्स, राइट? सो आपको वो डेट वापस करनी होती है. इट बिकम्स योर मॉरल ऑब्लिगेशन, योर लीगल ऑब्लिगेशन, एंड आप यू डोंट हैव एनी अदर चॉइसेस. जब आप किसी एक बंदे से पैसा लेते हैं, अगर आप एक रीजनेबल इंसान हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो पैसा वापस करना है, और अगर आप उसको वो पैसा वापस नहीं करेंगे, आपके जहन में एक बोझ रहेगा जब तक आपको उसका पैसा वापस नहीं करते. दैट्स हाउ थिंग्स आर. सो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, इस पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं, विच इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशनल डेट एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट दैट इज, दैट बेसिकली मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो जब रिसोर्सेज यूटिलाइज करती है, इट्स यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ ऑल डिफरेंट ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, राइट? अब उन रिसोर्सेज या जहाँ से वो रिसोर्सेज आ रही हैं, मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि योर रिसोर्सेज आर कमिंग बैक फ्रॉम सोसाइटी. सो आप सोसाइटी की वेल्थ को यूज़ करते हैं और अगेन सोसाइटी के एफर्ट्स को यूज़ करते हैं उस रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स बनाने में, और फिर सोसाइटी का पैसा यूज़ करते हैं अपने लिए प्रॉफिट्स कमाने के लिए. सो अगर आप सब चीज़ें ही सोसाइटी से ले रहे हैं, सो द मिनिमम दैट यू कैन डू इज रिटर्न बैक टू द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाट दिस इज. कि आपको हर ऑर्गेनाइजेशन को should do an organizational debt analysis. And now while they're doing an organizational debt analysis, you keep into mind 5 different categories. The first up is the suprahuman debt. Suprahuman debt is when God has made the earth, the sun and the moon and the water and the mountains and the land and the deserts for us. Now when he has made all these things so that we live our life easy, so that हमको benefit हो, so that हमको फ़ायदा हो. Let's say कि आज अगर अल्लाह मियाँ ने पानी ना बनाया होता तो हम काश्तकारी कैसे करते? If there were no mountains तो और बहुत सारे मसले आ जाते. अगर सूरज ना निकलता तो क्रॉप कैसे, गंदम कैसे उगती? So just realize कि God has made this entire earth for our benefit, and when He Almighty has done that, then it becomes our responsibility as well. It's a debt जो कि हमने रीपे करनी है by ensuring कि जिस तरीके से अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया को बनाया है, हम वो बैलेंस मेंटेन रखें, हम चीज़ों को ख़राब ना करें बल्कि बेहतर या उनका स्टेटस को मेंटेन करें. The second is debt to seers and practitioners. और दैट इज़ कि जी आपसे पहले जो रिसर्चर्स आए, आपसे पहले जो पढ़े लिखे लोग आए, आपसे पहले जो ऐसे लोग आए जो कि सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ आए, जिनका आई वॉज रिप्लेस्ड बाय वी, एंड दे डिड नॉट थिंक अबाउट देमसेल्व्स बट दे ओनली थॉट अबाउट द गुड दे कैन डू फॉर ह्यूमैनिटी. आपको ये भी सोचना है, और उनकी रिसर्च, उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस इज़ नाउ हेल्पिंग अस, राइट? सो जब उन लोगों ने आपके लिए इतना कुछ किया, ऐसे आपके लिए, I mean आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए इतना कुछ किया, then automatically it becomes the responsibility of the corporations as well that they have to repay the debt that they owe to these practitioners and these seers and these peers. Then you have debt to ancestors. मेरे दादा और उनके अब्बा और मेरे परदादा और my grandfather and my great grandfather, what they did for us, I owe it to them कि मैं अपनी future generations को बेहतर environment दूँ, या जो अभी मुझे environment मिली है वैसी दूँ, ख़राब करके ना दूँ. So that is the debt to ancestors. When they have given me something nice, and it becomes my moral obligation, it becomes my duty actually. I owe it to them. मेरी liability मेरे ऊपर थी कि मैं अपनी आगे आने वाली generations को भी या तो बेहतर environment दूँ, conserve करूँ, preserve करूँ,
या मैं जैसी मुझको एनवायरनमेंट मिली है वैसी एनवायरनमेंट तो एटलीस्ट उनको दूँ इफ़ आई कांट गिव देम अ बेटर एनवायरनमेंट. आई शुड नॉट स्पॉइल द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस बिकॉज आई ओwe a debt to my ancestors. Then you have debt to humanity as well. As an individual living, आप ऐसी चीज़ें बनाना चाहेंगे, आप ऐसी, रिमेंबर जब मैंने लिक्विड बॉम्ब की बात की थी कि जी जिस बंदे ने वो बनाया मोस्ट प्रॉब्ली वो जीनियस है, बट उससे अपनी नॉलेज को एक ऐसे काम के लिए यूज़ किया विच इज़ नॉट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर मैनकाइंड. दैट इज़ वाई वो नॉलेज सही नहीं है, वो वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही, इसलिए उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है. एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमको एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमको एक दूसरे के लिए लाइफ ईजी बनानी है, हमको वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल. एंड कीपिंग द सेम फिलॉसफी, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू कीप इन माइंड दैट दे आर इंडेटेड टू द ह्यूमैनिटी बिकॉज द ह्यूमैनिटी इज गिविंग देम सो मेनी थिंग्स. And it becomes a liability for the organizations, it becomes a debt for the organizations which they have to repay to the society. So the organizations and the corporations should basically ensure कि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो products बना रहे हैं, the products are doing or are working for the for better life of mankind and humanity. And finally you have your subhuman debts. Let's say कि जी आज हम बात करते हैं small thing like take any example. आप ants की example ले लीजिए, आप lizards की, let's take examples of lizards. I know it sounds very yucky, but then let's just discuss it. If today we assume that there are no lizards in this world, what will happen? It will be all good? No, trust me, it won't be. The number of insects are going to increase manifold. जितने insects होंगे उसके और adverse effects भी होंगे. So अल्लाह मियाँ ने जितनी भी subhuman are all those creatures which are not human और हमारे food chain में या हमसे नीचे होती हैं. Everybody, the animals, the plants, the bacteria, the जितना जो है वो human नहीं है, animals या animal kingdom में या plant kingdom में वो आपके subhuman categories हैं, right? आप किसी एक को equation से निकाल दें, आप किसी एक को extinct कर दें, what will happen? The entire balance of this earth is going to be changed and उसके consequences और after effects होंगे. So जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं that's helping us. बहुत सारी diseases के जो cures होते हैं उसी बैक्टीरिया से मिलते हैं जिससे वो create होते हैं. आप जब समंदर की बात करते हैं उसमें जो एक छोटा सा plant है which उसका बहुत important role होता है. आज वो remove हो जाएगा तो उससे शायद बहुत सारी fishes ख़त्म हो जाए, आपका जो animals जो sea animals हैं उन पर effect हो. Now, since all these subhuman categories are giving so much to us, and when I say us, they're giving to the corporations as well, then it also becomes the organization's responsibility कि वो subhuman debts को भी ज़हन में रखे और उनको fulfill करे. So organization, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये 5 टाइप की debts क्यों पढ़ रहे हैं? Because जब आप CSR के बारे में decision लेंगे, it should not be duty bound, it should not be result bound, or it should not be moral obligation bound, it should be debt bound. We owe it to all these people. हमारा कर्ज है इन लोगों पर, इन लोगों का हम पर या corporations पर कर्ज है. And liability is something which has to be paid. You like it or you don't like it. Debts have to be repaid, liabilities have to be repaid, and that is what an organizational debt analysis is. If an organization attitudes towards social existence is driven and inspired by this orientation of debt orientation, the journey will be towards duties, responsibilities, and sacrifice. And that is what the core essence of corporate social responsibility is. That is the crux of corporate social responsibility. Now, another way of implementing corporate social responsibility within an organization, एक तो हमने ये organizational debt analysis पढ़ा. The other way of implementing is through the integrative model of development C's, which are 3 C's basically: understanding concepts, acquiring competencies, and building connectivities. So एक तरीका corporate social responsibility को implement करने का is through organizational debt analysis, and the second way that you can implement CSR within the organization is by covering the 3 C's, which is concepts, competencies, and connectivity. So the first thing that you need to do in this C3 model is that
You need to understand concepts, core business ideas and goals. आपको अपने core concepts को define करना है, clearly define करना है. जब आप core concepts को define करेंगे, उसमें आपके जो values हैं वो बहुत ज़्यादा important role play करेंगी. Then you need to acquire competencies, human capital and knowledge management. आपको अपने resources को use करना है, आपको अपने factor of production को use करना है, आपको knowledge लेनी है, qualification लेनी है, experience लेना है, human capital को use करना है, so that products and goods and services can be created. And finally, you have to build connectivity with all the stakeholders. आपने सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए काम नहीं करना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना है. एंड जब आप स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, स्पेशली स्टेक होल्डर्स इन द ईयर 2013 इन टुडेज एनवायरनमेंट, दो स्टेक होल्डर्स आर नॉट स्टेक होल्डर्स जो कि नॉलेजेबल नहीं है. उनको एग्जैक्टली पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज with respect to corporate social responsibility. So the second way of implementing corporate social responsibility in the organization is through using these 3 C's, which is concepts, competencies and connectivity. और जब organization, and then you need to see that all of them are not independent of each other. These circles that you see here, they are all interlinked. आपके जो आपके concepts हैं, again concepts जो आपकी values होंगी, they will play a very very important role with respect to acquiring competencies and with respect to building connectivity and relationships with your shareholders. Similarly, जो आपके shareholders की needs, values होंगी, उनकी जो requirements होंगी, वो आपके concepts, ideas and goals को affect करेंगे और automatically आपकी competencies को भी affect करेंगे. और automatically आपकी जो competencies हैं, knowledge की, labor की, capital की, human capital की, वो आपकी connectivities with stakeholders को भी affect करेंगी और वो आपके goals को भी affect करेंगे. So everything is interrelated with one another, and since they are interrelated, that is the reason कि आप के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप, जब हमने शुरू में बात की कि आप अपना वैल्यू सिस्टम ही ऐसे बनाती हैं कि आपका through and through the organization, the value system जिसमें CSR बहुत important role play करेगी, वो आप इतना strong बनाएंगे कि जब वो strong होगा तो automatically आपकी जो पूरी organization है वो भी सही तरीके से काम करेगी, and they will be focused towards the operations and the better working of the business and the corporation. I guess with that we have ended our chapter number 5. I really do think that we should celebrate today because it was a very long chapter and I took my time, and thank you for your patience as well because हमने बहुत सारे lectures में इस chapter को ख़त्म किया. But please do realize that this is one of the most important chapters of your books and you need to be very very clear with it, right? So I'm not going to give you a recap because this entire lecture of mine, 21st lecture, was recapping chapter number 5. And I guess till next time I would say my goodbyes. Allah Hafiz.